I mean, obviously, all of us had like a lot of hopes for it. We obviously were like, it's come up in the media so much that we thought that at least, media pressure and people, the public eye would give some sort of direction to the courts. But it's extremely disheartening to see that it has been rejected, the plea. ये तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो इंसाफ दो बिल्किस को इंसाफ दो बिल्किस को इंसाफ दो मुझे लगता है कि बिल्किस को अब सबसे ज्यादा हम सब की आवाज की साथ की जरूरत है कहते हैं कि क़ानून अंधा होता है, लेकिन क़ानून की देवी इतनी भी अंधी नहीं होती कि वो हुकूमत के मफाद को ना देख सके, या फिर मुजरिम के मज़हब को ना देख सके, या फिर मज़लूम की बेबसी को ना देख सके। जी हाँ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के बिल्किस बानो के रिव्यू पिटिशन को बर्खास्त करने में इन्हीं बातों का ख़ास ख्याल रखा गया है कि उससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा, जुर्म करने वालों का मज़हब क्या है और मज़लूम कितना बेबस है। हालांकि मीडिया का प्रेशर बराबर बना हुआ था, अवाम का ताउन शामिल था, जगह जगह एहतजाज भी किए गए, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म की बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के जुमलेबाजी तक को निशाना बनाया गया, लेकिन फ़ैसले पर कोई असर न हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रमनाथ की बेंच ने गुजरात फसादात में इज्तिमाई असमत की मुतासरा बिल्किस बानो की तरफ से दायर करदा नज़र सानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसमें अदालत उज़्मा के 13 मई के फ़ैसले को चैलेंज किया गया था कि सज़ा में माफ़ी को सज़ा देते वक्त की पॉलिसी के मुताबिक समझा जाना चाहिए। यानी मौजूदा केस में माफ़ी के लिए गुजरात की 1992 की माफ़ी की पॉलिसी के बजाय रियासत महाराष्ट्र की पॉलिसी लागू होनी चाहिए, क्योंकि इस केस की समाअत महाराष्ट्र में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई के फ़ैसले के मुताबिक गुजरात हुकूमत ने फसादात के दौरान बानो के ख़ानदान के 11 मुजरिमों को माफ़ी दी थी। बानो ने 13 मई के फ़ैसले को चैलेंज करने वाली मौजूदा नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की थी। मुलाहिज़ा करें साला डिजिटल की ख़ुसूसी रिपोर्ट। See, we have a process of curative petition. Certainly, that can be raised in the court. That's a process, legal process that we have. But what matters most is that people need to talk of the subject. The most important thing is that the judgment of the court is based on certain set of facts and law. The court delivers on that. But what we need to look at is that the kind of change that need to happen, the kind of understanding that need to come with the larger perspective. This court has always come up. The collective conscience has been one of the terms that has been employed by the Supreme Court time and again in great number of cases, whether it is Afzal Guru's case or whether it is Ram Janambhumi's case. Many of the cases we talk in terms of, it has been talking in terms of collective conscience. I think that also deserves in the case of Bilkis Bano. And people need to raise this issue of collective conscience of the Supreme Court. Why? Is it selective? Is something which we question. I think most people also are thinking in these lines. I think the court need to hear again the curative petition if it is preferred from this perspective. I mean, obviously, all of us had like a lot of hopes for it. We obviously were like, it's come up in the media so much that we thought that at least, media pressure and people, the public eye would give some sort of direction to the courts. But it's extremely disheartening to see that it has been rejected, the plea, and we don't know what would happen next. You can imagine how, there'll be different takes on this. It's probably going to be a take on minority issue. It's going to be a take on a woman issue. It's going to be a take on whether it's a Gujarat High Court issue. So there's going to be so many dimensions to it that we're not going to be able to see the actual reason behind it. I hope it doesn't become a political agenda, and I hope that, the thing is that judgments and all of this have to come out in such a way that public should be able to read it and understand it exactly for what it is without using too much legal jargon. And I hope some sort of judgment comes out with this and people can understand and see and actually realize how it's unconstitutional in this way, where we've gone wrong, and, kind of actually fight against this and not just accept it and be like, okay, another judgment gone down the drain. It's nothing. What is the point of all of this? And the thing is that if you're just putting up, rejected, you're not giving the reasons for it,
you need to make sure the public actually understands what these reasons are. They can fight against it, they can take a stand against it, not just accept it. And we have to still understand that it is someone who's from a minority class, and that dimension is going to be played a lot. But putting all of that aside, it is still illegal, it's still unconstitutional in a way, and we're not following legal practices. I'm quite disappointed that the petition was supposed to be heard about the very, very unspoken issues of the Bilkis Banu. I think the world had bowed its head. The incident is so atrocious. The incident is unimaginable. I think the sufferers, the vulnerables are very, very high in numbers. I think I would really urge my Supreme Court of India on the land of justice to kindly review and to please accept the petition and listen from your hearts and brains, from your minds. I think let's stand with the social justice perspective, and especially in my country, who comes from certain amount of vulnerable and the religious minority background, I think we need that justice today to uphold the constitutional morality. I think I strongly urge and I request my court to kindly please open your hearts to listen to this petition. Thank you. अभी जो वर्डिक्ट आया है इसके तो चांसेस थे, लेकिन एक होप थी कि कहीं ना कहीं से एक इंसाफ मिल सकती है क्या, या किसी के दिल में कोई बात सही आ सकती है क्या करके. लेकिन आज के वर्डिक्ट देखने के बाद तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई, और जो हमारे उम्मीदें थे उस पे पूरी तरह से पानी फिर गया है. तो इस तरह के इंसाफ की इंडिया में, भारत में उम्मीद नहीं थी. जिस तरह के आजकल इंसाफ चल रहे हैं, जिस तरह से आजकल हमारे साथ जो फ़ैसले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो इंसाफ का साथ देना चाहिए था. लेकिन ये बहुत ही अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि रेपिस्ट को जब बाहर आते हैं तो उनको हारों से उनका स्वागत किया जाता है, उनको मिठाई खिलाई जाती है. क्या हम लोगों की गैरत इतनी भी मर गई है कि हम लोग इस तरह के काम देखते हुए भी अपने आप को आँख बंद करके रह जाएं? नहीं, बेटी तो बचाने का है ही नहीं यहाँ पे सवाल. जो बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं, उनको सरों पे बिठाया जा रहा है, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे अब पहले सुनते थे कि हम लोग पॉलिटिक्स गंदे लोगों की है, यानी पॉलिटिक्स शरीफ लोगों की नहीं है बोलकर, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स सिर्फ गंदे ही लोगों की हो चुकी है.